this rail structure interaction is the effect of track on bridge and effect of bridge on track, right? Because both are deformable structures. Track is a deformable structure. It can deform in the longitudinal direction because of the change in temperature of the rail, like it can move in the longitudinal direction. It deflects in the vertical direction also. And similarly, the bridge deck also, it deflects in the vertical direction as well as it expands or contracts in the longitudinal direction also, right? So since both are deformable structures, something happening in one structure is going to have effect on the other structure. So basically ये जो इशू है ये हाईवे ब्रिजेस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाईवे ब्रिजेस में क्या है कि ब्रिज डेक है, ब्रिज डेक के ऊपर कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, आपका सिंपल गर्डर एंड स्लैब है, उसके ऊपर जो रोड भी बनाई है आपने, तो रोड इज पार्ट ऑफ द ब्रिज डेक, देन यू हैव द एक्सपेंशन जॉइंट्स. So there is no other structure on top of the bridge deck in highway bridges. So this issue is not applicable there. But in railways, we are having a track, and in fact, a track is like a continuous. If you have LWR, it is a continuous structure over the bridge. That makes your bridge indeterminate, at least in the longitudinal direction. Because even though you are having simply supported spans, but there is a continuous structure on top of that. So for the longitudinal direction, forces in the longitudinal direction, the arrangement becomes indeterminate, right? And because of that indeterminacy, its mathematical formulation is quite complex, but people have done that. And for now, almost last 30 years or so, this has become a standard practice. And in the world, no railway bridge should be designed without using this, because unless you do this interaction analysis, you cannot calculate what will be the forces in the bridge, and you cannot calculate what will be the effect on the track. So it's a must for safety of both track as well as bridge. So we'll try to understand all these issues slowly. And the relevant code for this UIC 774-3R. These UIC codes, we have to understand one thing. They are not complete by themselves. What I mean is, they are the basic technical document, and on the basis of that document, different railway systems make their own codes, right? For example, for this issue, you have a separate Spanish code, UK code, German code, Korean code, Chinese code, right? They have made their own codes, but basic documents is UIC 774-3R. On Indian Railways, we have not made our separate code. We have simply said that we will follow this, but some of the design parameters that will be applicable to our track, that we have specified in the bridge rules. तो जो bridge rule आपको डीन साहब ने पढ़ाया था, उसमें जो LWR forces वाला clause था, उसमें ये आपको बताया होगा, right? And दूसरा है ये एक BS report है, BS 114, is a version 2 of this report. This is a beautiful document. I would say one of the best made document by RDSO. In this, the clauses, important clauses of this UIC code, they are mentioned, and their explanation also given, right? Okay, why we are doing this, and wherever this code is silent, that also mentioned in that. So if you really want to understand this topic, read this BS 114 along with this code, right? And it's not very difficult. कोई भी कोड आप पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ने में वो 20-25% से ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो कोड को आप कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है. बट इफ यू लिसन टू माय लेक्चर एंड गो थ्रू दिस थिंग, देन उसके बाद अगर आप कोड पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप पहली बार में अराउंड 60-70% समझ जाएंगे, और दूसरी बार पढ़ोगे तो सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी. सो प्लीज डू इट. नॉट मेनी पीपल इन इंडियन रेलवेज स्टिल अंडरस्टैंड दिस. ओनली देयर आर वेरी few people. So it's basically there is a vacuum of the people who are well aware of this. So please do this and make yourself sort of expert in this field. Okay. So what are the objectives that we are going to achieve through our discussion is to develop qualitative and quantitative understanding about RSI. Qualitative means actually what is happening, what is the phenomena, and then we will do some calculations also to understand all those interaction phenomena, right? Then to know in brief about various techniques and tools available for carrying out RSI analysis, and to understand options available to manage the unfavorable situations as a result of RSI. Right now, what is happening is कि even if you send your bridge for analysis to RDSO, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपने RDSO भेज दिया,
RDSO में कोई SSC लेवल का बंदा उसकी एनालिसिस कर देता है और उसके बेसिस पे अगर कोई पैरामीटर जो डिजाइन पैरामीटर्स उसमें फेल हो जाता है तो वो ये नहीं बताता है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सिंपल सॉल्यूशन इज का आप LWR को काट दो, SWR बना दो। सो वो ठीक नहीं है, वो अप्रोच अच्छी नहीं है। देयर आर वेज एंड मींस अवेलेबल टू टैकल दोज अनफेवरेबल सिचुएशंस। Okay, the cutting the LWR should be the last resort. I would say it's basically criminal to cut the LWR and to provide facilitated joints on the ballasted deck bridge. Right? We should do everything to avoid that situation. These are the important policy documents issued by RDSO. BS 114 version 2 already I talked about. Then yes, A and C number 45 to bridge rule. Basically, this is the correction slip that laid down the criteria for carrying out the RSI analysis. So 2014 में था। जो अभी प्रोविजन है ब्रिज रूल में रिगार्डिंग LWR फोर्सेस वो इसी करेक्शन स्लिप से आए थे। एंड द कॉपी ऑफ दिस इज अवेलेबल इन दिस BS 114. Then there are some letters issued by RDSO. These letters might help you. For example, this letter. Item number 4, instructions to zonal railways to establish infrastructure for carrying out RSI. अगर आपको अपना कोई प्रपोजल वेट कराने में आप माइडा सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, उसको प्रपोजल को वेट कराने में दिक्कत है तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। राइट, फाइनेंस को कन्विंस करना है तो यू कैन से दिस इज द RDSO has given these instructions long back and we have to like procure the MIDA software or any other software that you feel want to go for LUSAS, you go for the LUSAS. But MIDAS is better because in MIDAS all the calculations are automated. In LUSAS you have to do a lot of calculations manually. Okay, so this can help you to get your proposals verified. Then we have a separate guidelines for the metro systems also. So if at some places the metro tracks are crossing your system, you can ask them to submit the RSI analysis as per these guidelines. And then in 2017, RDSO had issued the guidelines for LWR on and ballasted deck also. Okay, so these are some important documents. I'm going to share all these documents with you. Relevant codes and other references में bridge rule है, UIC code, IR concrete bridge code, like this IS 2911 for pile foundations, Euro code, and then these some books. Okay, so these are reference books because at some places, somewhere or else, these books have been referred. If you go to this BS 114, in that this book is referred, this book is referred, and I think this book is also referred, right, for doing various calculations. So it's good to have these books in your library. Like every design office should have all these books. ये जो चीजें हैं UIC code I am going to share with you, right? बाकी सारी चीजें तो आपके पास अवेलेबल होंगी. यूरो कोड भी चाहिए तो इसकी कॉपी भी I can share with you. So now let us come what is RSI, right? So it's a rail structure interaction. You might have heard soil structure interaction, right? अगर आपको फाउंडेशन की एनालिसिस करनी है सॉफ्टवेयर से करनी है तो बेसिकली ये जो मॉड्यूल होता है सॉफ्टवेयर में, तो सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, तो इससे बेसिकली टू स्ट्रक्चरल मटेरियल्स they are interacting and through that interaction they are transferring the forces from one material to other material and vice versa. Similar kind of phenomena is there in the rail structure interaction. Here structure means basically your bridge, right? So it's a complex phenomena in rail bridges which involves a detailed study and effects of the forces transmitted between rail and deck and subsequently to the substructure through bearings, right? So it's a sort of technical definition. If you don't understand this definition right now, don't worry about this. But once you go through the course, you will be able to understand what is the meaning of this definition. Okay, and don't get frightened by these words like complex phenomena. Yes, mathematically it's a complex phenomena, but we are not going to go into the mathematics, right? Mathematics will be taken care of by the software. So now rail structure interaction takes place due to thermal movement of bridge deck and rail, right? Now your bridge deck is made of either steel or concrete or steel concrete composite, right? And rail is made of basically steel. So these materials, when they are subjected to change in temperature,
they will undergo linear expansion or contraction. Your bridge deck will try to expand when temperature goes up. Similarly, your track also will try to expand when the temperature goes up. So these movements, because these movements cannot take place independently, bridge deck and track, they are basically coupled. So if I do some movement in the bridge deck, it is going to affect my track. If there is some movement, longitudinal movement in the track, it is going to affect the bridge deck, right? Because they are coupled. And how we have coupled these things in our system, we have coupled the track and bridge deck by the medium of ballast, right? In metro systems, we don't have that kind of intermediate medium. There the rail is directly fastened with the bridge deck. Okay, so they are attached intimately. But here we have coupled our system through the medium of ballast, right? And due to tractive effort, ब्रेकिंग फोर्स, जब ट्रेन आएगी आपकी ब्रिज पे तो वो ट्रैक्टिव एफर्ट भी लगाएगी, ब्रेकिंग फोर्स भी लगाएगी. तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग फोर्स ट्रैक में लगा रही है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, एडजेसेंट स्पैन्स को कैसे जा रहा है, अप्रोचेस को कैसे जा रहा है, प्लस सबस्ट्रक्चर में कैसे जा रहा है. लाइक सो हाउ दैट फोर्स इज फ्लोइंग और गेटिंग अपोर्शनड बिटवीन ट्रैक एंड ब्रिज, दैट is basically given by this analysis, right? Then due to deck bending. Deck bending is basically when your bridge is subjected to the live loads, it will bend because deck is a flexible structure. जब vertical load आप लगाओगे तो उसमें deflection होगा और deflection होने से उसमें basically end में rotations होते हैं, right? You may think like end rotations कितना होगा, structure में कितना deflection होगा. So for smaller spans, yes, the deflection and end rotations will be very small. But when you go for the bigger spans, for example, like 60 meter, 50 meter kind of spans, these can become significant. And in fact, ये जो effect है interaction analysis में, ये dominate करने लगता है, right? So when we learn this topic initially, we have this doubt, what is this, what is going to happen with this, right? Because normally the kind of deflections or kind of rotations are taking place in the bridge deck, they are very, very small. I also had this kind of reservation to begin with. But when I did the analysis, when I saw the results, then I realized this is a very, very important phenomena. Okay. So basically these three interaction effects. What are the interaction effects? एक तो deck का जो thermal movement हो रहा है और track का जो thermal movement हो रहा है, उसकी वजह से दोनों में क्या interaction हो रहा है. Then ट्रैक के ऊपर जो हम ट्रैक्टिव एफर्ट या ब्रेकिंग फोर्स, दोनों में से एक गवर्निंग होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन एज पर द टेबल्स गिवन इन योर ब्रिज रूल्स. उसकी वजह से फोर्सेस किस तरह से फ्लो करेंगे. देन जो डेक का बेंडिंग होगा उसकी वजह से ट्रैक में क्या इफेक्ट आएगा और सब स्ट्रक्चर में क्या एडिशनल रिएक्शंस जनरेट होंगी. ओके, तो ये सारी चीज अभी इसको हम समझेंगे धीरे धीरे कि तीनों को विजुअलाइज कैसे करना है फिजिकली, राइट. नाउ फर्स्ट फिनोमेना इज ग्रेजुअल. First phenomena is due to thermal movement, because the temperature variation takes place gradually, right? While remaining two are rapid. Tractive effort braking force will be applied rapidly. When your train is going on the bridge, the train will occupy the span in a fraction of a second. And deck bending also, because the deck bending is due to the live load. Why this is important to understand or to differentiate is basically the material properties that we use, like modulus of elasticity, or the subgrade reaction of the soil, subgrade modulus of the soil, that depends on whether the load applied is gradual or in the static manner, or load applied is in dynamic manner. Okay, so for these two things, we will have to take the dynamic properties of the material, and for the first thing, we will have to take the static properties of the material, right? So that's why we have to be aware how these phenomena are taking place. Now, interaction effect due to thermal movement of rail will take place only if SEG is present on bridge or within 150 meter. That is, अगर आपका bridge breathing length में है, okay? Because if you recall your LWR basic principles, then the longitudinal movement of track in LWR takes place only in the breathing length. In the central portion of LWR, there is no longitudinal movement. So if there is no longitudinal movement in the track, then no interaction is going to take place, right? So the thermal movement of rail is only relevant when the bridge is located in the breathing length of LWR.
Now there are some long-term deformations also, like deformation of deck under creep and shrinkage. We know that in a concrete structure, the creep and shrinkage will take place. Shrinkage is not that long term. Most of the shrinkage will take place in the initial 2-3 months time, right? And normally a bridge is commissioned. Maybe it takes 2-3 months time to commission after it is constructed. So basically shrinkage is not much, but creep can be significant. Over the life of the structure, creep can be significant. And in fact, creep is so much, like if you travel on some of the old highway bridges, you will find that the bridge is high, the deck is high at the supports, and in the center, it has become a permanently sagged, right? So that is basically the effect of creep. And that's why we need to have the camber so that at least that creep is also neutralized over a period of time, right? Or the creep does not have the effect of like creating those kind of sags in the bridge deck, okay? But in RSI interaction, we have neglected these things. Why we have neglected? These are considered to be dissipated during various track maintenance operations, hence not considered while carrying out RSI studies. इसका मतलब क्या है कि जैसे क्रीप का कुछ इफेक्ट हुआ, क्रीप की वजह से आपका डायमेंशन चेंज हुए, राइट? जैसे ही मैं उसके ऊपर से ट्रैक की स्टिफनेस को डिस्ट्रॉय करता हूं, फॉर एग्जांपल आई डू दी टीआरआर, जब टीआरआर करते टाइम पे सारी रेल्स हम निकाल देते हैं, जैसे ही मैंने रेल्स डिस्ट्रॉय की तो ट्रैक का लॉन्गिट्यूडनल वो खत्म हो गई, या हमने बीसीएम चलाई ट्रैक के ऊपर तो उसमें भी बैलास्ट को पूरा लूज कर दिया, तो ये जो भी इफेक्ट इसका जनरेट हुआ है क्रीप एंड श्रिंकेज का, ये उस समय डिसिपेट हो जाता है, राइट? एंड इंटरवीनिंग टाइम में जो इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल है. सो कॉन्शियसली वी हैव टेकन दैट इसको अगर निग्लेक्ट कर देते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी मटेरियल इफेक्ट. ओके, सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ ओनली दीज 3 इफेक्ट्स दैट आई हैव मेंशन्ड अबव. ओके, नाउ यहां तक अगर आपको पूरी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं है. अब इन तीनों फिनोमेना को हम एक एक करके फिजिकली समझेंगे एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज हैपनिंग. Now, interaction effect due to thermal movement of deck, right? Here, what is happening? I have taken the example of a simply supported deck. This deck is having a fixed bearing or pin end at left support and roller bearing at the right support. Now, if this deck was free to expand, right? अगर ये इस तरह का था, इसका टेम्परेचर रेंज किया तो मान लो ये इतना एक्सपेंड हो गया, राइट? एंड दिस रोलर इज हैविंग से 0 फ्रिक्शन. सो टेल मी, विल देयर एनी थर्मल फोर्सेस इन दिस ब्रिज डेक? इसमें कोई फोर्सेस इंड्यूस होंगे क्या? अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ब्रिज डेक का तो इसमें कोई फोर्सेस, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस ब्रिज डेक में इंड्यूस होंगे? फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा सर. फ्री एक्सपेंशन में नहीं होगा, नहीं होगा. या है ना, कोई भी मेटल है, अगर आपको मान लो रेल को भी आपने रोलर्स पर रख दिया है, कितनी भी लंबी रेल हो, 10 किलोमीटर लंबी भी है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओ, फ्रीली एक्सपेंड हो रही है तो उसकी लेंथ काफी एक्सपेंड हो जाएगी, बट उसमें कोई भी स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होंगे. द स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेस फ्री. तो हियर ऑल्सो माई ब्रिज डेक विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेस फ्री. बट इफ आई समहाउ क्रिएट सम resistance to free expansion, how can I create the resistance? For example, let me have something on the bridge deck which is opposing this free expansion, right? तो क्या होगा, जितना फ्री एक्शन अभी हो रहा था उतना नहीं होके होगा ये, क्योंकि पूरी तरह से मैंने इसको फिक्स नहीं किया है, मैंने उसको कुछ रेस्ट्रेंट लगाया, तो जितना पहले हो रहा था उतना नहीं होगा, कम होगा, राइट? ऐसा ही होगा ना. अगर पहले मान लो 10 मिलीमीटर हो रहा था तो ये रेस्ट्रेंट लगा दिया तो हो सकता है इसके बाद में 6 मिलीमीटर हो. Are you able to follow this? Yes, sir. तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट होंगे एंड दोज लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस विल बेसिकली गेट ट्रांसफर टू द फिक्स सपोर्ट. ये जो रोलर सपोर्ट है इस पे तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस ले ही नहीं सकता ये, क्योंकि रोलर है. तो जो भी इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे? वो सपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट? सो इफ आई रेस्ट्रेन द फ्री thermal expansion or contraction of the bridge deck by any means, then it will lead to creation of longitudinal reaction at the support.
I hope this is clear to you. It's a very simple thing, but we should be very clear about this. Okay. So same thing is happening here, but what it is doing, यहाँ पे देखिए अभी ब्रिज डेक है, ब्रिज डेक के ऊपर ट्रैक भी है, and basically the track is restraining the longitudinal movement, right? So you have this bridge deck, it is trying to expand to the right due to rise in temperature. So this intended expansion to the right is being resisted by the presence of the track on this bridge deck, right? So basically what is happening, there is a ballast layer between your rails and sleepers and the bridge deck. So जब ट्रैक एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है तो ये बलास्ट लेयर को डिफॉर्म कर रहा है, और बलास्ट लेयर की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्टिफनेस होगी, राइट, अलोंग विद द ट्रैक. ऑफ कोर्स वी डोंट टेक द बलास्ट अलोन बिकॉज ट्रैक इज आल्सो देयर. तो ट्रैक की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसकी स्टिफनेस या उसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस इसके ऊपर ब्रिज डेक के ऊपर एक्ट करेगा और इसके ये फ्री एक्सपेंशन होने से रोकेगा, राइट. बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रैक? ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसका ट्रैक पर क्या इफेक्ट है? ट्रैक पे इफेक्ट ये है कि जब ये राइट साइड में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है तो ये ट्रैक को राइट साइड में कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ट्रैक को लेफ्ट साइड से ये पुल करने की कोशिश कर रहा है. सो ब्रिज डेक इज ट्राइंग टू पुल द ट्रैक फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इट इज ट्राइंग टू पुश द ट्रैक टू द राइट साइड. इज क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? फिजिकली मतलब फिजिकली व्हाट इज हैपनिंग, राइट? समझ में आ रहा है ना? यस सर. है ना? So what will be the net result of this kind of interaction? The net result will be, because I am opposing the free expansion of the deck, there will be a reaction in the opposite direction on the fixed support. And since I am trying to push the track this side, the end on which my deck is expanding, that is the end on which I have the roller, there will be compressive stresses this side. Right? So this is the compressive stresses this side, and since I am trying to pull the track from left side, there will be tensile stresses. Right? So now the presence of deck which can undergo thermal expansion is creating a situation where I am getting some additional force, longitudinal force on the top of bearing and additional stresses in the rail. Right? Is this clear? यस, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए तभी आगे जाएंगे. किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ. इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, बट वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. क्लियर ना? सो बेसिकली नाउ यू हैव टू डिजाइन योर सिस्टम. लाइक नाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड हियर सिस्टम. सो व्हेन यू डिजाइन ए रेलवे ब्रिज, you have to have a system approach. So you have two main components of this system. One is the track structure and other is the bridge structure. So now this interaction effect is having the impact on both the systems. It is creating some additional stresses in track and it is creating some additional force in the substructure. So I have to take care of these things, right? Now if you recall the discussion on bridge rules, उसमें आपको ये दिया हुआ है कि बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन इफेक्ट तो एडिशनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी ट्रैक में. वो 60 kg 52 kg रेल के लिए कंप्रेशन टेंशन में उनकी वैल्यूज दे रखी हैं. तो ये भी जो एडिशनल चीजें आएंगी वो हमको उस लिमिट में डिजाइन करना है. अगर वो उस लिमिट से बाहर है इसका मतलब यह है कि यू हैव ब्रीच्ड दिस ट्रैक सेफ्टी लिमिट्स, राइट, एंड देन यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ LWR ऑन दैट ब्रिज, राइट. So if this is clear, we can move ahead. Okay. Now this is the thermal force in LWR. Here it is written CWR. So basically LWR and CWR is the one and the same thing technically for the purpose of this understanding. Those who are new to the railway system, for them, let me explain. Okay, if you have a track like this, where you have some expansion joint, जिसको हम के SEJ बोलते हैं, switch expansion joint at these locations, right? And this is called like your CWR, right? Then up to certain distance, there will be thermal expansion or contraction of the track, right? And this length is called basically breathing length. So here up to this point, this is breathing length, right? And the thermal forces will gradually build up in this breathing length. Why gradually build up? तो जैसे ही expansion start होता है, हर स्लीपर पे
longitudinal resistance mobilize होता है. So that longitudinal resistance will go on adding at each sleeper, and finally it comes to the maximum value, and maximum value is given by this formula. EA alpha delta TR. E is modulus of elasticity of steel. Area is cross-sectional area of your rail. Alpha is coefficient of thermal expansion of the rail steel. Delta TR is change in temperature from the reference temperature. That reference temperature is the temperature at which we have fastened the rail with the sleepers, or the stress-free temperature of the rail. Okay, so now if my bridge is located somewhere here, there is no longitudinal movement in the track, so no interaction effect due to this region. But if my bridge is located somewhere here, right, then there is going to be a longitudinal expansion and contraction of the track, and that is going to create the interaction effect. Okay, normally our attempt is we do not want to have any SCJ on the bridge or on the approaches of bridge. Bridge के approaches में at least 100-150 मीटर तक कोई भी SCJ हम नहीं रखना चाहते, बिकॉज उसकी वजह से एक तो इंटरेक्शन इफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है कि कोई भी आप SCJ लगा दोगे उसकी वजह से मेंटेनेंस इश्यूज, राइट, बिकॉज ब्रीदिंग लेंस क्रिएट होती हैं, ट्रैक का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, तो इट बिकम्स ए मेंटेनेंस प्रॉब्लम. एंड स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग SCJs on the bridges and the bridges are having longer spans, then the expansion contraction at SCJ also will be much higher, right? And in fact on foreign railways, if you see, they have SCJs, especially designed SCJs, which can permit the longitudinal movement up to 1 meter. हमारे यहाँ तो SCJ टोटल 120 मिलीमीटर गैप या 190 मिलीमीटर गैप का है. Okay, because we don't have that kind of long span bridges. But when we go for very long span bridges, the expansion contraction of that can be very high, and then SCJs will have to accommodate that kind of expansion contraction. Okay, so basically what I'm trying to explain here is, if your bridge is there in the breathing lane, then you will have to consider this phenomena also. Okay, but most of the situation we want to avoid bridge in the breathing length. Now let us come to the interaction effect due to longitudinal force, right? So we have discussed the interaction effect due to thermal changes. Now longitudinal force and tractive effort. So what is going to happen? अगर आपका ये ब्रिज है, ये ट्रैक है, इस ट्रैक को मैंने लिंक कर दिया है ब्रिज डेक से बाय वे ऑफ दीज स्प्रिंग्स, right? These springs are basically representing the longitudinal resistance or longitudinal stiffness of the track, right? इसको कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे क्या वैल्यूज हैं, इसकी आगे बात करेंगे. तो बेसिकली इफ आई ट्राई टू move the track this side, these springs are basically opposing that movement. When they are opposing the movement of the track, they are basically pushing the deck by the equal and opposite reaction forces in this direction, right? So when the load comes on this like this, it is going to push the deck like this, and it is going to create reactions on the supports and going to deflect the supports like this, right? So this is what is happening. Now again see this, just a minute, let me clear these annotations. Again see this. Now this application of this longitudinal force is sudden, right? It happens in a fraction of second, because train comes say at 120-100 kmph. It will take hardly a fraction of second to occupy or to apply this full longitudinal force. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि there is a sudden longitudinal displacement of the bridge deck, right? Now this sudden longitudinal displacement of the bridge deck is not good for the track. ब्रिज पर फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट जो हमारी लिमिट्स है उसके अंदर है तो ब्रिज पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ब्रिज पर जो फोर्स है हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, बट ये ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहा है. ट्रैक में क्या डिस्टर्ब कर रहा है? जैसे ही सडनली लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, जो आपका बैलास्ट है ट्रैक के ऊपर, उसका जो कंसोलिडेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे ही बैलास्ट का कंसोलिडेशन डिस्टर्ब होता है, ट्रैक की जो स्टेबिलिटी है अगेंस्ट बकलिंग वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट? सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ फिनोमेना is not only creating the additional or this reactions at the supports, it is disturbing the stability of track also, right? So because of that, we have limited this sudden deflection due to the longitudinal force to 5 millimeter. ये 5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स की वजह से जो रिएक्शन जनरेट हो रही है यहाँ पे, राइट, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन 5 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये डिजाइन पैरामीटर है.
This design parameter is not on account of bridge, it is on account of the stability of track. Okay, is this clear? Yes, sir. All right. Now there is one more thing. अब ये जो longitudinal force है, for example मैंने 100 tons longitudinal force लगाया, right? I am taking some value. So this 100 ton में से ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 100 ton ये support reactions में चला गया. Maybe I am getting only 20 ton at this support, 20 ton at this support, to total 40 tons to the support, and 60 tons is getting transferred to the approaches or adjacent spans. Okay. So this is basically what we call dispersion. जो आप ब्रिज रूल में डिस्पर्शन पढ़ते हैं वो ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है वो सारा का सारा सपोर्ट में नहीं जाता, पार्ट ऑफ दैट गोज टू द अप्रोचेस, राइट, बाय दिस इंटरैक्टिव एक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द ब्रिज. Okay, what we do for the design of new bridges, like I assume that 100% of this force is getting transferred to the substructure. Okay, that concept was okay till we did not have the LWR on the bridges, but now that concept has to be revisited and we have to understand that carefully, right? Because many a times, even if you take the 100% of the longitudinal force going to the support, that may not be enough, right? We will talk about that later, but just keep in mind that just taking 100% of the longitudinal force may not be enough. In certain situations, it may be enough, or even it may be more than the required, but in certain situations, it may not be enough. Okay, so this is what is happening due to longitudinal force, that is tractive effort or braking force. So this is the second interaction effect. Now let us come to the deck bending. Okay, so here I have made this figure quite exaggerated so that you are able to understand the basic phenomena. Okay, here this just let me switch over to the pen. This your firm black line is basically representing the undeflected deck or the deck under constant loading, right? And this red dotted line, this broken line, right? This is representing the deflected shape under live load. Okay, so this is basically neutral axis before deflection, and that is the neutral axis after deflection, right? So we know when this kind of deflection takes place in the beam, right, the top corners will move inwards because top fiber will shorten and bottom corners will move outwards, right? This is what is going to happen. Okay, यहाँ पे दोनों तरफ इलास्टोमेरिक बियरिंग है तो दोनों एंड चले जाएंगे. अगर यहाँ पे मान लो कोई फिक्स बियरिंग होती तो ये वाला कॉर्नर इधर नहीं जाता, इधर वाला जो कॉर्नर था अगर यहाँ पर रोलर होता तो ये हॉरिजॉन्टली पूरा स्ट्रक्चर मूव करता और फिर रोटेट होता. तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ शेप विल कम, but it's good enough to understand this. Okay, so what is happening here, my top corner is, or top corners are moving inwards, right? The top corners are moving inwards, what we call it shortening of deck top, right? Now in a highway bridge, this thing can happen without having any effect anywhere. Why? Because this kind of bending is not being resisted, but in railway we have another structure over this which is connected with the deck through those longitudinal springs representing the longitudinal stiffness of track. So ये जो फ्री बेंडिंग दिखाया है इस फिगर में, ये नहीं होगा. ट्रैक इसको रजिस्ट कर रहा है, ट्रैक इसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है. तो उसकी वजह से अगेन क्या होगा, अगेन देयर विल बी दी रिएक्शन फोर्सेस इन बोथ रेल एंड ट्रैक, राइट? नाउ यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन फोर्सेस यू अज्यूम. अगर इसके ऊपर ट्रैक है, अगर इसका मैं यहाँ पे एक रेल बना देता हूं और इस तरह से अगर ये सॉसर शेप में डिफ्लेक्ट हो रहा है डैक, तो इसमें रेल में किस तरह के फोर्सेस यहां पे जनरेट होंगे? What is doing to, from which side it is trying to pull the track and to which side it is trying to push the track? Anyone? टेंशन ऑन रेल. नहीं, टेंशन पूरी रेल में टेंशन होगा या कहीं पे टेंशन कहीं पे कंप्रेशन?
टेंशन होगा सर बोथ साइड। नहीं, टेंशन नहीं होगा आपका। रेल में जो भी फोर्सेज इंड्यूस हो रहे हैं दे हैव टू बी सेल्फ बैलेंसिंग काइंड ऑफ। एनीवे देखो क्या हो रहा है कि यहां से आप पुल कर रहे हो और यहां से आप पुल कर रहे हो, तो बेसिकली इस रीजन में टेंशन होगा रेल में, बट ये दोनों तरफ से इधर पुश कर रहा है। तो सेंट्रल पार्ट में, तो इसमें अगर आप प्लॉट करेंगे, रेल में फोर्सेस प्लॉट करेंगे, तो बेसिकली ये फोर्सेस इस तरह से आएंगे। ये टेंशन है और बीच में यहां पे कंप्रेसिव फोर्स पैदा हो रहा है, राइट। टेंशन क्या करेगा? टेंशन रेल को फ्रैक्चर करने की कोशिश करेगा, कंप्रेशन ट्रैक को बकल करने की कोशिश करेगा, right? So again these effects have to be added to other effect, and sum total of the stresses has to be within the limiting values given in the bridge rule. Okay, so you are able to appreciate what is happening here? आप appreciate कर पा रहे हैं ना कि जो shortening of deck हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? Are you able to appreciate this? Okay, now yeah, now since this deck bending is being prevented by the presence of track, उसका एक फॉलोआउट ये भी होगा कि सपोर्ट्स पे भी रिएक्शंस जनरेट होंगे। तो अगेन इन ईच फिनोमेना there are the longitudinal forces getting induced at the supports and there are stresses getting induced in the track, right? In this deck bending there is one more thing which is lifting of edge. अगर आप यहाँ राइट साइड में देखें तो ये lifting of edge है by this amount. Now this lifting of edge also can be important if there is a SEJ is this location. हो सकता है हमें SEJ प्रोवाइड करना पड़े यहाँ पे, राइट? क्यों प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ बाद में बात करूंगा। अगर ये SEJ प्रोवाइड किया है और यहाँ पे ये लिफ्टिंग ऑफ डेक अगर ये एक लिमिट से ज्यादा है तो यहाँ पे ये ट्रैक की स्टेबिलिटी और ट्रैक सेफ्टी को अफेक्ट करता है, राइट? सो but this is not important for low speeds. So up to 160 kmph speed normally we don't bother about that, but for a speed more than that the value for this has to be prescribed, right? On Indian Railways so far we have not prescribed this value. For the high speed route they must have prescribed this value कि ये deck bending की वजह से इसका जो lift है वो कितना होगा। Normally this is limited to 3 millimeter, right? On ballasted track, of course on slab track this value might be different, right? So these are the three interaction phenomena taking place, right? Now before proceeding, I want you to interact and to tell if any of these things you have not understood. They are very, very simple things, but we have to get these things in our mind, right? तभी हमें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, एटलीस्ट इसकी फील आनी चाहिए, क्वालिटेटिव फील आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। Any queries so far on this? If there is no query, I take either everybody has understood or nobody has understood. So like both are. It is clear sir. सर एक डाउट था सर। बताओ। क्लियर तभी होता है जब डाउट होता है। अगर आपको डाउट हो रहा है तभी क्लियर होगा। बोलो सर। LWR अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो अपना कंटिन्यूअस बीम की तरह बिहेव करेगा, अपना पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस, नॉट सिंपली सपोर्टेड लाइक। Yes, it will be a continuous structure. For example, like if I have multiple spans, multiple simply supported spans, then there is a track, right? So this track is linked with these spans by way of those springs. So now track is continuous over the simply supported bridge. So what it is doing is, अगर मुझे vertical reactions calculate करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फोर्स आएगा ये सीधा उस सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शंस का तो ट्रांसफर हो जाएगा। ऑफ कोर्स बिकॉज कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, सम पार्ट में गो टू द एडजेसेंट स्पैन, बट वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैक की स्टिफनेस इतनी कम है कि ये लॉन्गिट्यूडनली वर्टिकल लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। ओके, जैसे वो आर्च ब्रिज में मैंने एक समझाया था ना कि लगा कोई स्लीपर पर लोड लग रहा है, 3 स्लीपर हैं, यहाँ पे पूरा अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो 0.5 डब्ल्यू यहाँ जाता है और 0.25 डब्ल्यू यहाँ जाता है, 0.25 डब्ल्यू यहाँ जाता है। तो नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल लोड का हो जाता है, तो ये इसी स्पैन पे, एडजेसेंट स्पैन पे इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। तो फॉर वर्टिकल लोड योर स्ट्रक्चर रिमेन्स स्टैटिकली डिटर्मिनेट, बिकॉज सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दीज रिएक्शंस विदाउट वरीइंग अबाउट द
compatibility of the deformation, etc. Okay, but when there is a longitudinal force, because in track we have the longitudinal force also that is coming from the train, longitudinal force, attractive effort or braking force. Now that longitudinal force, how much it will go to this span, how much of that will go to this span or approaches, that cannot be determined by simple static analysis. It becomes a indeterminate problem, right? And it becomes an indeterminate problem of sort of infinite like degrees kind of thing. Okay, so it cannot be solved manually. It's not possible to have a manual solution for this. You have to basically go for the computerized solution for this. तो समझ में आ गया आपको आपकी जो क्वेरीज थी? इज इट क्लियर और आई हैव कंफ्यूज्ड यू? यस सर, फाइनली अपन को सिंपली सपोर्टेड की तरह ही ट्रीट करके और स्ट्रक्चर को ट्रीट करना है सर। नहीं 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 नहीं, सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रीट करना है आपको वर्टिकल फोर्सेस के लिए। यस, जब आप वर्टिकल रिएक्शंस निकाल रहे हैं तो सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रीट करना है। लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस के लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपको कंप्यूटर से एनालिसिस ही करनी पड़ेगी, तभी आप निकल पाओगे। जैसे यही बोला था ना कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो भी लग रहा है आपका, से मान लो 100 टन लगाया मैंने। यस सर। अभी अगर मैंने 100 टन लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ट्रेन से लगाया तो ये कितना फोर्स मेरे बियरिंग्स पे जा रहा है और कितना फोर्स ट्रैक के थ्रू अप्रोचेस में ट्रांसफर हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। इसका सिंपल एनालिसिस हम नहीं कर सकते। अभी तक हम जो डिजाइन में लेते आए हैं कि 100%, ये मान लो अगर मेरा 100 टन फोर्स है तो इस पूरे 100 टन को मैं बियरिंग्स पे, अगर दोनों इलास्टोमेरिक बियरिंग है तो मे बी 50 टन हियर 50 टन हियर, आई कैन टेक इट, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग वी हैव बीन डूइंग, बट दिस इज नो लॉन्गर वैलिड व्हेन वी आर हैविंग ए ballasted track on the bridges. Why it was valid for the old kind of track? That is let me explain that also so that you are not confused. अभी जो हमारा पुराना ट्रैक था ब्रिजेस के ऊपर, मेनली गर्डर्स होते थे, तो उसमें क्या था, उसमें और अभी के ट्रैक में क्या फर्क है, उसमें और बलास्टेड ट्रैक में क्या फर्क है? अगर आपका स्टील गर्डर है जिसके ऊपर आपके चैनल स्लीपर हैं एंड देन आपका रेल है एंड इट इज सपोर्टेड, राइट? नाउ what kind of fastenings we have between the sleepers and rails on the girder bridges? We have the rail free fastenings. We call them rail free fastenings. Now what is the property of rail free fastening? Property of rail free fastening is, if this rail is trying to move with respect to sleepers, if rail is trying to move in the longitudinal direction with respect to the sleeper, then these fastenings are not resisting that movement, right? Now in that situation, if my girder tries to expand like this, for example, I have a fixed bearing here, I have a roller bearing here, and my girder tries to expand due to thermal expansion, what is going to happen? Girder will expand, along with the girder the sleeper also will move, but are they pulling the rail also? Now, when the sleepers are moving along with the girder, are they pulling the rail? They are not pulling the rail because we have provided the rail-free fastenings. So, the presence of rail-free fastening has created a situation where the interaction between the rail and bridge is not taking place. Or what we call is, rail and bridge are not coupled structurally, or they are decoupled by way of rail-free fastening. Same thing will happen अगर मेरा deck bending हो रहा है, राइट? अगर ये आपका डेक बेंडिंग होके डेक शॉर्टनिंग हो रहा है दोनों तरफ से, तो डेक शॉर्टनिंग हो जाएगा, स्लीपर्स मूव कर जाएंगे, रेल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो रेल फ्री, अगर रेल फ्री फास्टनिंग आपके पास है तो आपका इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा होगा। वो क्या होगा कि थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा वहां पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, प्लस ट्रेन आएगी तब फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा इंटरेक्शन होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। सो रेल फ्री फास्टनिंग के केस में हमें रेल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन वी आर इन ए बलास्टेड डेक, इन दैट सिचुएशन वी आर कपलिंग द ट्रैक विद द गर्डर बाय वे ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस ऑफ द ट्रैक। जो लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस होगा ट्रैक का, मान लो ट्रैक मूव करने की कोशिश कर रहा है ब्रिज के रिस्पेक्ट में, या ब्रिज मूव करने की कोशिश कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक, तो जो ट्रैक की लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है वो उसको रेजिस्ट करेगी। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। यस सर। या अभी भी कोई डाउट है इसमें?
Anybody else? कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेल कन्वर्सेंट विद RSI. अभी मैं ये बेसिक आपको क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं. इसकी कैलकुलेशंस कैसे करना है वो अभी 3 लेक्चर और हैं इसके, नेक्स्ट वीक में हम उसमें भी बात करेंगे इसकी. बट कोई अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए. राइट नाउ दिस इंटरेक्शन इफेक्ट ड्यू टू डेक बेंडिंग, sorry, they depend primarily on deck stiffness and position of neutral axis. Why the position of neutral axis? For example, here this position of neutral axis. Now this shortening जितना हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है. अगर न्यूट्रल एक्सिस हायर है तो ये शॉर्टनिंग कम होगा. राइट तो अगर आपका ट्रैक ब्रिज डेक के न्यूट्रल एक्सिस के पास में है तो आपका इसकी वजह से जो इंटरेक्शन इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ट्रैक इज ऑन ए थ्रू गर्डर ब्रिज, थ्रू गर्डर ब्रिज का जो ट्रैक का लोकेशन है और उसका जो न्यूट्रल एक्सिस आएगा वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी. तो ये जो इफेक्ट होगा डेक बेंडिंग का उसमें कम हो जाएगा. राइट सो एंड अदर थिंग इज डेक स्टिफनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक स्टिफनेस? हाउ डू यू डिफाइन द डेक स्टिफनेस? What do you mean by deck stiffness? Deck stiffness का मतलब क्या है? Section modulus of Yeah, basically deck stiffness will be given by your EI value. Right? Now your deflection is inversely proportional to EI. आपका जो डिफ्लेक्शन फॉर्मूला है उसमें कुछ कांस्टेंट होगा एंड कुछ मान लो अगर यूडी हेल है तो W⁴ इस तरह का फॉर्मूला होता कि नहीं होता. सो बेसिकली योर डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EI एंड योर EI इज डेक स्टिफनेस. स्टिफर इज द डेक. कोई मटेरियल है उसके लिए ये तो कांस्टेंट हो गया, बट I की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और डेक स्टिफर हो जाएगा. तो डेक स्टिफर होगा तो उसकी वजह से इसको जो बेंडिंग इफेक्ट और एंड में रोटेशन हो रहा है और जो एंड टॉप में शॉर्टनिंग हो रहा है, ये वाला जो टॉप में शॉर्टनिंग हो रहा है ये कम हो जाएगा. राइट सो बेसिकली योर डेक स्टिफनेस इज कंट्रोलिंग दिस फिनोमेना. ओके एंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. क्लियर हुआ नहीं हुआ? हेलो क्लियर हो गया सर. Yeah. Now, let me take 5 minutes more. I think I wanted to give you one exercise. Okay, let me. Yeah. Now, what are the parameters? Or before that, let me show you how we model the structure. So this is how we create the physical model. Because कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पहले उसका फिजिकल मॉडल हम क्रिएट करते हैं, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं. सो इवन दो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बिकॉज दैट इज टू कॉम्प्लेक्स, वी मस्ट हैव आइडिया हाउ द मॉडल वर्क्स. ओके सो हियर आई हैव ए ट्रैक. Sorry, I have a track and the track is linked with the bridge by way of these springs, right? And here I have a switch expansion joint also in the track, right? So expansion contraction of the rail also will take place. So there will be interaction due to that also, right? These are longitudinal stiffness of track or longitudinal resistance. We represent this by small k. इसकी values क्या है आगे अपन बात करेंगे, right? Then we have decks here. Now deck का definition क्या है with respect to this analysis? Here you see this deck number 1. This is the deck number 1. It is basically extending from this point to this point, right? So deck is the length of the bridge superstructure which basically is going to expand, right, between the expansion joint, here expansion joint, here expansion joint. So this is your expansion length for this deck because this deck is going to expand freely over this length, right? Spans are different. Here we have 3 spans. This is 1 span, this is 2 span, this is 3rd span, right? But we have deck 1 and deck 2. For deck 2, we have the deck length and span length equal, almost equal. Right, deck length will be basically from end to end. Span length will be the effective span. So slight difference, but practically they are the same thing, right? So this we have to
understand, differentiate between these two. Now, which interaction effect will be controlled by the deck length? Deck length से कौन सा interaction effect है जो control होगा? जो डेक लेंथ है, जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा इसका. तो जो कौन सा इंट्रैक्शन इफेक्ट है जो इसकी वजह से कंट्रोल होगा? एनीवन? लॉन्गिट्यूडनल जो थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन डेक का हो रहा है, जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना ही उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, राइट? सो बेसिकली हमारे यहाँ अभी कंटिन्यूस स्पैन बनाने की प्रथा नहीं है, बट अगर आप वर्ल्ड रेलवे में जाइए, people want to have the longer and longer spans, especially for the high speed operations, because to control their dynamic effect they need the longer spans. But if you go for longer spans, this effect is going to kick in, right? This effect is going to create problems in the track. So उसकी वजह से हमें कंट्रोल करना पड़ता है. तो बेसिकली सारा जो कंट्रोल होता है, जो पैरामीटर्स हैं, वो ट्रैक की वजह से कंट्रोल होते हैं कि ट्रैक अनसेफ हो जाता है. तो इन RSI the main issue is we have to take care of the track safety, right? और उसके साथ जो फोर्सेज ब्रिज में जनरेट होते हैं हम उसको डिजाइन कर लेते हैं. ओके. एंड स्पैन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्पैन लेंथ ये है, स्पैन की वजह से कौन सा इंटरेक्शन इफेक्ट कंट्रोल होने वाला है? डेक बेंडिंग वाला है ना, बिकॉज बेंडिंग विल टेक प्लेस ओवर द स्पैन. स्पैन छोटा है, बेंडिंग कम होगी. फॉर एग्जांपल हियर these are the individual spans, so deck bending will be controlled by the spans, but the thermal effect will be controlled by the deck length. Okay, so this way we have to differentiate, and these are the ways and means available to optimize the designs of these structures. Okay. Now one more thing here in this model, you can see here I have put this spring. Here there is no spring. Again I have put a spring here. Here there is no spring and here there is no spring. So can you signify what is the meaning of this? I have put some springs and I have not put some springs somewhere. बताएंगे आप क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब है? रोलर सपोर्ट में जो है स्प्रिंग नहीं है सर, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा मूवमेंट को. Exactly. So here there is a roller support. It is not restricting, so there is no stiffness of the support in the longitudinal direction. यहाँ पे देखो मैंने रोलर भी बनाया है बट स्प्रिंग भी बनाई है. तो बेसिकली ये किस तरह का सपोर्ट है? रोलर भी है और स्प्रिंग भी है लेफ्ट साइड में. इट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली योर फिक्स सपोर्ट, राइट? जो आप जो ट्रेडिशनली अपना फिक्स या पिन जॉइंट होता है. सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, आई हैव फ्रीड अप दिस सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग द रोलर, बट जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है उसको यहाँ स्प्रिंग से रिप्रेजेंट किया है. सो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सपोर्ट. नाउ हियर ओनली रोलर, सो दिस इज एक्चुअली अ रोलर सपोर्ट, राइट? दिस इज एक्चुअली अ रोलर सपोर्ट. अगेन हियर this is basically your pin support and your roller support. So this bridge is basically this kind of, अगर स्ट्रक्चर आप देखें इसका तो ये इस तरह का है, ये है, राइट? ये इस तरह का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये कॉमन सपोर्ट है, पियर है, और यहाँ पे ये आपका दूसरा सपोर्ट है. तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पे ऐसे आइडियलाइज किया हुआ है. क्लियर ना? ओके. So I think I will close here because I have to attend the BSc and remaining things, मतलब यहाँ तक अपन आ गए हैं. या एक चीज मैं कर लेता हूं. एक आपको एक्सरसाइज मुझे देनी थी, ये चीजें बाद में अपन डिस्कस करेंगे. लेट मी गिव यू दैट एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज है, ये मैं अभी आपका ये प्रेजेंटेशन आपके उसमें डाल दूंगा. ये हमारा 30.5 मीटर गर्डर का कंपोजिट गर्डर है रेलवे का. ओके. सो इन दिस, हेलो मैं क्लास दे रहा हूं. हाँ हाँ ठीक. ओके. सो ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका कंपोजिट ब्रिज का, इसका अपने को डेक की स्टिफनेस कैलकुलेट करनी है. सो कैन समवन कैलकुलेट व्हाट विल बी द डेक स्टिफनेस फॉर दिस? इज ए कंपोजिट स्टील मटेरियल, RCC मटेरियल, राइट? एंड सेक्शन ऑल्सो इट इज हैविंग a variable depth. So because you will be needing to calculate the
modulus of elasticity and the like drag stiffness for this kind of composite thing. So if you do this exercise, all your fundamentals about this will be clear, right? And we will be using this structure to do our calculations in the future lectures. So I want you to do this exercise and calculate, I would say, the EI for this, not only I want you to calculate, sorry. I want you to calculate EI for this cross section. ओके आप करिए इसको, आप करते होंगे ऑलरेडी, आपके पास में इसके एक्सेल प्रोग्राम भी होंगे जो डिजाइन में काम कर रहे हैं, राइट? या नहीं है तो आप कैलकुलेशन करने के लिए बना सकते हैं, या नहीं है तो मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसका EI वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसकी स्टिफनेस क्या है, और इसको हम आगे के जो कैलकुलेशन है उसमें यूज करेंगे। ओके तो आपके पास सैटरडे संडे है, इन द इंटरवीनिंग टाइम यू कैन डू दिस, राइट? So I will close it here. To summarize, I have explained what are the interaction effects, how the physically track and bridge they are interacting, and what are the effects in terms of additional forces in rail and bridge due to those interaction effects. Again, you read this, go through this. If you have any queries, any confusion about this, कोई समझ में नहीं आता है तो even on Saturday, Sunday also you can call me, you can interact through WhatsApp also, no issue. But I want all of you to be very clear about this. Okay? बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं इस स्लाइड पे, इसके बाद में बाकी की चीजें हम बाद में बात करेंगे, राइट? सो प्रेजेंटेशन पूरा शेयर कर देना सर। पार्डन? प्रेजेंटेशन अपना पूरा शेयर कर देना, तो उसको पढ़ लेंगे तो कुछ अच्छा रहेगा। हाँ प्रेजेंटेशन में पूरा शेयर कर दूंगा, चारों लेक्चर का। हाँ प्रेजेंटेशन में आपको बहुत ज्यादा समझ में हो सकता नहीं है, बट आई विल शेयर दैट, राइट? अच्छा पढ़ लीजिए एक बार उसको, एंड जितना अभी पढ़ाया है उसको फिर से एक बार देखिए, उसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है। And I will share that UIC code also. I will share that BS 114 report also. Please go through this over the weekend and please understand this topic. And let me tell you, if you understand this topic, if you equip yourself with the ability to do these calculations, आपकी बहुत वैल्यू होगी रेलवे में। रेलवे में बहुत लोग हैं जो इसको, बहुत ही कम लोग हैं जो इसको समझते हैं और इसकी कैलकुलेशंस कर पाते हैं। And it is mandatory. You are violating the codal provisions if you are not doing the RSI analysis and designing a bridge. It should not be acceptable, but somehow our railway system is so lax that we can accept everything. Okay, but learn it. It's very simple, not very difficult. Okay, so I close my lecture here.